everyone. Vadodara branch of WICASA welcomes you all to episode 3 of FinTalk Podcast Series, where we dive deep into the latest trends, insights, and expertise from the world of finance. I am Purva Shah, Joint Secretary of WICASA Vadodara, and I am thrilled to introduce CA Shubham Maloo, a distinguished chartered accountant. Shubham is not only a seasoned professional specializing in the integrated practice of GST, but also a dynamic content creator who shares his expertise through various platforms. His unique ability to simplify complex concepts has made him a go-to resource for startups. In addition to his impressive professional background, Shubham has authored a book named 21 Mistakes Indians Are Making in Finance. Before establishing himself as a leading voice in GST and content creation, Shubham gained valuable industrial training with HITACHI Hi-REL Power Electronics, where he gained a broader perspective on global practices. Whether you are an entrepreneur seeking clarity on GST or simply interested in the intersection of finance and innovation, this episode is sure to offer valuable insights. Please join me in welcoming CA Shubham Maloo. Shubham, it's a pleasure to have you here. Thank you so much, Purva and Baroda branch of WICASA for inviting me to your podcast series. I think this is a valuable initiative by your branch because, at the current time, this is the need of the hour, which I consider, for every student or Thank you for accepting our invitation. Yeah, most welcome. Moving forward, sir, we all deeply know that every content creator has a story of its own. So can you take us for a dive into your story and how did you get into the line of content creation and building a following of approximately 2 lakh followers? Thank you, Purva. So the journey started with, I guess, from the childhood only because, if you want to deep dive into this content creation profession, तो कुछ ना कुछ creative gene होना बहुत जरूरी है. That's what I consider. True. So from the childhood only, if I see, then I was little bit of creative kind of person because I used to edit photos, edit videos from the childhood only. कि चलो कुछ side में हम करते रहते हैं along with doing CA obviously. But when it comes to full-time content creation, so I started just a year back very seriously. Before that, I was into practice since 2017. So I cleared my CA in 2016. Then I went to Mumbai for a year for doing a job in a legal firm. And then I switched back to the city which I'm currently in, Ahmedabad, because my articleship was from the same city in Ahmedabad. So I was, quite fascinated by Mumbai, but somehow I got discouraged after going there. So I moved back to the city and started my own practice. अभी होता क्या है कि when you start something which is kind of entrepreneurship, तो आपको हर चीज, even हर department में क्या क्या चीजें हो रही है, वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, and you have to do something out of it because you are alone in the beginning. Right. Even I come from a Mewari family and I am from Chittorgarh, Rajasthan properly. So in my family there are approximately 18 to 20 chartered accountants. So CA बनना is like हमारे लिए बहुत ही कैजुअल सी चीज थी कि यार सीए तो करना ही है, राइट? बिकॉज सब जब बड़े भाई सबने सीए किया है तो आप उनको देख के सीए तो कर ही लोगे. बट आफ्टर डूइंग सीए व्हाट डिफरेंट यू विल डू, दैट मैटर्स, राइट? सो इन माय फैमिली एवरीबॉडी इज इनटू जॉब, नोबडी इज इनटू प्रैक्टिस. सो मेरा पहले से थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का था, तो मैंने सोचा कि चलो प्रैक्टिस में हम घुसते हैं, 2-3 साल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से जॉब में आ जाएंगे. तो आई स्टार्टेड विद प्रैक्टिस. When you start with the practice, you have to do something to build your name. So that was the first motive because मेरा कोई ऐसा कोई decade old practice नहीं था. It was a fresh and new beginning. So how to build your name? So for that I started giving lectures on GST in colleges. For that I started taking sessions in ICI on different topics because my experience was in GST. Okay. तो जब मैंने lectures और sessions लेना चालू किया, so after that I realized that कि क्यों ना इसको हम किसी तरीके से एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, बिकॉज व्हेन वी गिव अ सेशन देयर आर हार्डली 100 people, 200 people, राइट? बट व्हेन यू हैव टू गो टू अ लार्जर ऑडियंस टू बिल्ड योर नेम, देन यू हैव टू गो टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट कर दी थी 3 साल पहले. आई स्टार्टेड अ पॉडकास्ट सीरीज. मेरे को लगा कि यार पॉडकास्ट चालू करता हूँ, एकदम हिट हो जाएगा, ये तो नीड ऑफ द हार है, करते हैं. बट समहाउ वो चला ही नहीं क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द टैक्टिक्स, यार क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है, हाउ टू मैनेज योर स्टोरेज, किस में शूटिंग करना है, कैसे बोलना है. आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनी सच ऑफ थिंग.
सो आई थॉट कि चलो इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस नाउ, और अब हम धीरे धीरे करके देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। 1 year बैक सडनली आई वाज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे जब मैं कंटेंट देख रहा था तो मुझे लगा यार वेरियस नॉन चार्टेड अकाउंटेंट्स आर गिविंग ज्ञान ऑन फिनेंस, राइट। जिनका फिनेंस से के एफ से भी कुछ लेना देना नहीं है, वो बता रहे हैं कि भैया आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ इन्वेस्ट कर लो। मैंने बोला यार वी आर सीएस एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और उस टाइम पे सीए कंटेंट क्रिएटर्स भी काफी कम थे। अभी भी पीपल आर कमिंग जो सीए हैं, एक दूसरे को देख देख के कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, बट इफेक्टिवली से अभी भी सीए कंटेंट क्रिएटर्स काफी कम है लैंडस्केप के It अंदर। started with a stream, सो वन now it is an ocean. या एब्सोल्युटली तो वही मैंने फिर 1 साल पहले फिर से ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की, एंड उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग ऑन मेजरली स्टार्टेड विद फाइनेंस, देन आई स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम्स व्हिच माय क्लाइंट्स आर फेसिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, उन सब चीजों के अराउंड मैंने कंटेंट क्रिएट करना चालू किया, एंड इट्स बीन अ गुड जर्नी टिल नाउ। Oh, thank you so much, sir. Sir, can you brief our viewers who are also students and wish to pursue content creation on what are the setup requirements and strategies to research on different types of contents? ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी, उस टाइम पे तो आई थिंक ये एआई टूल्स देयर वाज नन, चैट हाँ, जीपीटी, these are like क्लाउडे, ये 2 सब years, लाइक 3 years हाँ ये development. हाँ हाँ ये लास्ट आई थिंक मैंने तो आई थिंक 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, सो एवरीथिंग यू हैव टू बिल्ड ऑन योर ओन। बट लास्ट 1 year से ये जो चैट जीपीटी और क्लाउडे आ गया है, तो व्हाट आई फील इज कि जो स्क्रिप्टिंग पार्ट है दैट बिकम्स इजी। क्यों? क्योंकि काफी सारी चीजें जहाँ पे आपको 3 लोगों से बात करनी पड़ती है फॉर वैलिडेशन की क्या ये सही है या नहीं है, यू कैन जस्ट आस्क दिस टूल्स, और वो आपको एक तरीके से आई कैन से 80% तो सही आंसर दे ही देंगे, 20% विल बी नाउ योर अजम्पशंस कि आपको उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो व्हाट आई फील इज कि जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर स्क्रिप्टिंग की जर्नी है दैट इज बिकम इजी। सेकेंडली व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, तो उसके अंदर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, वन इज स्क्रिप्टिंग, वन इज रिकॉर्डिंग हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, एंड one is editing. So editing is also an important part which plays while you creating content. So Agreed. editing में भी अभी क्या हो गया कि मार्केट इज वेरी वाइड, तो you can get many editors as a freelancer, you can get many applications in the market जिसको यूज करके आप एडिट कर सकते हो। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई डू नॉट हैव अ बिग सेटअप एट ऑल। एक सिंपल सा एंड्रॉइड मोबाइल हुआ करता था उस टाइम पे तो, और एक लाइट हुआ करती थी, रिंग लाइट, जिससे कि लाइट का जो है फोकस वो भी पूरा रहे, एंड स्क्रिप्टिंग मैं अपने हिसाब से ही करता था, राइट। सो इट वाज अ वेरी कैजुअल जर्नी विच आई स्टार्टेड। उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम के टूल्स भी अभी भी है, इंस्टाग्राम के कुछ टूल्स हैं, ग्रीन स्क्रीन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ टूल्स, आई यूज्ड टू डू दैट। गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली व्हेन यू गो इनटू दिस जर्नी, तो उसके बाद क्या होता है कि व्हेन यू गेट लिटिल बिट ग्रोथ, व्हेन यू गेट लिटिल बिट मनी आउट ऑफ इट, उसके बाद यू कैन इन्वेस्ट इन द टूल्स। नाउ आई हैव परचेज द माइक, नाउ आई हायर एडिटर्स जो कि मेरा पूरा एडिट करते हैं, नाउ आई हैव हायर्ड स्क्रिप्ट राइटर्स कि मुझे स्क्रिप्ट लिखते थे। बट दीज ऑल आर आफ्टर यू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू आर बिगिनिंग, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट From मोबाइल the scratch, और yeah. एक, हाँ हाँ, और एक छोटा मोटा आप माइक ले लीजिए 2-4 हजार का, तो भी आपका काम हो जाएगा टू बिगिन विद। Yeah. Okay. Moving forward, as already mentioned, you have authored a book. You are an active content creator and also into the practice of chartered accountants. And from what we can see, you have managed it all so well. So can you advise our viewers on how to create a portfolio of skills for a dynamic personality like you? Yeah. So when we talk about multiple portfolio of skills, right? So what I think is आपका portfolio बन सकता है वहीं पे जहाँ पे आप passionate हैं। Look, True. I am into practice from last 5 years, right? I know in and out कि यार practice के अंदर क्या क्या हम problems face करते हैं। And if you see my content, मेरा content is majorly around the problems which a person face, in GST, maybe in income tax, in startups. Now I have introduced a new series which is like giving business ideas, Yeah. which is also a big problem in India because हर जने को entrepreneurship में घुसना है, हर जने को business करना है, but क्या business करना है किसी को पता नहीं, right? तो people सी कि यार मुझे क्या करना है, मुझे कोई अच्छा आइडिया मिल जाए तो मैं उसमें पैसा डाल दूं, फैक्ट्री डाल दूं या वो सब चीजें। सो व्हाट आई थिंक इज कि अगर आपका पैशन फॉर एग्जांपल जीएसटी है, नाउ पैशन कैन बी आल्सो, आपकी लैंग्वेज में पैशन है, हमारी लैंग्वेज में इसको हम नीश बोलते हैं।
कि आपकी नीश क्या है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जीएसटी के अंदर, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी नीश जीएसटी, मुझे जीएसटी पूरा समझ आता है, उसके लॉज क्या है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स क्या आ रहे हैं, वो सब चीजें मुझे समझ आती है, तो दैट कैन बी अ नीश। तो उस नीश के अंदर इफ यू स्टार्ट वर्किंग अराउंड दैट नीश, यू कैन डेवलप मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंटेंट, create content only on GST litigation, create content only on GST registration, on GST returns, तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी मार्केट में बनती है, और उस आइडेंटिटी के बेसिस पे यू कैन कन्वर्ट मेनी थिंग्स, यू कैन ग्रो योर वर्क, राइट? बिकॉज आपको सब लोग जीएसटी गए या जीएसटी की वजह से जानने लगेंगे, तो एनीवेज कभी भी किसी को जीएसटी का काम पड़ा तो वो आपको याद करेंगे, राइट? सो दैट्स हाउ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग यू कैन डू। बट द ओनली थिंग इज इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई योर नीश। अगर आपको ऑडिट पसंद है, राइट, तो यू कैन क्रिएट कंटेंट अराउंड ऑडिट्स। ऑडिट के अंदर इतनी सारी केस स्टडीज आती है, रोज कुछ ना कुछ, फ्रॉड्स, स्कैम्स, वो सब निकल के आ रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से हाइड किया, क्या किया। आप वो इंटरेस्टिंग कंटेंट बना के भी अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, along with that, you can create a name out of your niche. So when you talk about multiple skills, obviously आपको आज के टाइम पे skills acquire करना is not, obviously it is important, but for creating a content it is not necessary. You can just focus on your field, you can just focus on your niche. बाकी सब चीजों को आप ऑटोमेट करके भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चालू कर सकते हो। Absolutely true. What would be your advice to students who want to channel their knowledge through the means of content creation but are unable to do so? देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन काफी ब्रॉडली ये क्वेश्चन है, बट आई विल आंसर इट वेरी स्पेसिफिकली कि सीए फील्ड के अंदर जब हम देखते हैं, व्हेन वी एंटर इनटू सीए एज ए स्टूडेंट और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबने देखा है और हर जने ने ये फील किया है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, हमारी मार्केटिंग स्किल्स हो गई, वो काफी कम होती है। वाई? बिकॉज हम लोग किसी कॉलेज नहीं जाते हैं, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ाई करते हैं, ठीक है? वहां पे भी पढ़ाई ऐसी होती है कि आप बस बुक पेन लेके पढ़ाई करके घर पे आ जाओ चुपचाप। यू डू Every नॉट student will इंटरेक्ट, relate to this. Yes. yes, you do not interact much with the people. Yeah. Obviously there are GMCS और वो सब है, लेकिन मेरे को वो लगता है यार 15-20 दिन में कोई भी स्किल सेट तो नहीं सीख सकता। इट रिक्वायर्स सम टाइम। व्हेन आई कंपेयर विद एमबीए, राइट, एमबीए मान लो 2 साल का कोर्स है, यू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, यू डू सो मेनी इवेंट्स इन द कॉलेज, तो आपका ऑटोमेटिकली कुछ स्किल्स ब्रश अप होती है। और उस वजह से क्या होता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन द लाइफ, you play out better than a CA in terms of communication and marketing skills. So when you are a student or when you are doing CA, तो आपको क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज द विकासा ओनली, व्हाट यू गाइज आर डूइंग, यू गाइज आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, यू गाइज आर डूइंग पॉडकास्ट, राइट? तो ये सब स्किल्स की वजह से आपकी ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन स्किल विल गेट बेटर। एंड इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स गेट बेटर, देन ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को दूसरी जगह चैनलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डूइंग कंटेंट क्रिएशन इन विच यू नीड टू स्पीक वेरी मच। फॉर एग्जांपल, यू कैन बी ए स्पीकर, like in the colleges on a particular topic, you can select any of the topic, you can be a speaker. So if you are a student, right, my only suggestion would be in do those things which makes your communication skills and marketing skills, how to sell something better. और उसके लिए आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको विकासा मिलता है, आप विकासा कीजिए। आपको सीए के अपार्ट भी देर आर मेनी, देर आर मेनी क्लासेस, मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विच आर देयर, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो इफ यू हैव टाइम, ऑब्वियसली फ्रॉम सीए स्टडीज। अगर आपको टाइम मिलता है तो वो भी आप कर सकते हो। ऑब्वियसली आजकल तो वर्चुअल भी काफी चीजें अवेलेबल है जिनसे आप अपनी वोकल स्किल्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो एज ए स्टूडेंट, you need to do that to stand in the world after clearing CA, right? So I think that will be the specific answer कि आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन उन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा जिनसे आपका मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो। Yes, true. What you said about selling yourself is the need of the hour right now, and we can all see the competition that is increasing day by day. Absolutely. Highlighting on what you have said, you have successfully grown a large audience on social media. Can you talk about some challenges you faced during this journey and how did you overcome them? Okay. So what I see is, as a content creator on Instagram, मेरा majorly Instagram पे ही है. So what I see is content creation is a very long term game. It's not kind of कि it's like बहुत सारों को लगता है यार एक रील वायरल हो गई है तो ये सेलिब्रिटी बन गया, वैसा नहीं होता है। उसके पीछे there are hours of script writing, hours of editing involved, जिसकी वजह से हो सकता है शायद वो एक रील वायरल हुई हो,
right? So content creation, what I consider is a long term game. It's similar to, if you can say, CA. आप एक बार CA बन जाते हो तो जर्नी खत्म थोड़ी हो जाती है, जर्नी तो तब चालू होती है, राइट? सिमिलर टू दैट, इफ यू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग, तो जर्नी खत्म नहीं होती है, उसके बाद जर्नी चालू होती है कि हाउ टू सस्टेन दैट फॉलोइंग, how to build more network, how to open more gates for monetization maybe. So what I think is, if you are doing content creation, many people stuck at some level. I have seen friends when I was at 6,000 followers. There was one guy, he was also at 6,000 followers. Today I am at, let's say, 189 followers. He's still at 6,000 followers, right? So if you compare it, there are many people who get stuck in this journey, right? एंड मे बी द रीजन ये हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, शायद वो जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है वो चीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे. देयर कैन बी मेनी रीजंस, बट द थिंग इज दैट इट इज अ जर्नी ऑफ लॉन्ग टर्म. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक साल करके मैं बैठ जाऊंगा, राइट? यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली, एंड आपको इंस्टाग्राम को भी कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी. रीजन बीइंग, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स इस तरीके से बने कि अगर आप उनको 2 दिन में, 1 दिन में एक रील नहीं प्रोवाइड करोगे, दे विल नॉट गोना पुश योर कंटेंट. Right? Because they want more and more content creators, they want more and more people using their platform, right? So what I think is ki in this journey I have also faced many issues. I was stuck at certain point, but after I experiment with different stuff, it worked very well for me, right? तो हर जर्नी में रुकावटें तो आती है, लेकिन उन रुकावटों के साथ भी आपको वो persistence रह के उस पे काम करना, that is the real winning, I guess. Yes. It's about cracking the code in the long run. Absolutely. Continuing this, given the dynamic nature of social media algorithms, what strategies do you follow to ensure that your content reaches your target audience and continues to grow further? Yeah. So majorly strategies में as such, what I do is normally मैं week में try करता हूँ 3 वीडियो तो मेरी चली जाए, है ना, कि 3 वीडियो जाएगी तो ही वो मुझे इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पुश करेगा. एंड सेकेंडली, नाउ धीरे धीरे, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस, राइट? आप कुछ कंटेंट पीस डालते हो, यू डू नॉट गेट मच एंगेजमेंट, देन यू एनालाइज कि यार ये क्यों नहीं चला, ठीक है? फिर आपको कुछ चीजें समझ आती है, देन इन द नेक्स्ट रील यू इम्प्रूव दोज थिंग्स. हो सकता है वो चले, नहीं चले, देन इन द नेक्स्ट रील यू इम्प्रूव दोज थिंग्स. तो इफेक्टिवली व्हेनेवर यू आर पुटिंग द कंटेंट, you have to keep your mind कि यार, because Instagram reel को we can divide a complete reel into multiple parts. For example, I'll just give you an example. मैं normally एक Instagram reel को इस तरीके से divide करता हूँ that first 3 second to 4 second is a hook, which we say कि उस hook को सुनने के बाद जो भी उस reel को देख रहा है वो उस reel को पूरी देख के जाए, right? Then there is some call to action which I give. बहुत सारे लोग वो नहीं देते, बट कि आपको करना क्या है, इस रील को देख के क्या करना है, इस रील को देख के कमेंट करना है, इस रील को देख के मेरे चैनल को फॉलो करना है, आपको क्या करना है. सो दैट इज काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन वी हैव टू पुट. देन देयर इज इंफॉर्मेशन पार्ट, कि आप क्या बताना चाह रहे हो इस रील के अंदर, दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज देयर. एंड देन अगेन इन द एंड देयर इज कॉल टू एक्शन, सो दैट पीपल डू नॉट फॉरगेट कि भाई आपको क्या करना था. सो दैट इज हाउ आई क्रिएट माई रील. ऑब्वियसली हर जने का अलग हो सकता है, हर कंटेंट क्रिएशन का अलग हो सकता है, बट व्हाट आई सी इज स्ट्रक्चर को फॉलो करके देयर इज गारंटेड एंगेजमेंट इफ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग इन वैल्यू टू द पीपल हु आर वाचिंग योर रील. सो व्हाट आई डू इज आई प्रोवाइड कि अगर कोई भी मेरे रील पे कमेंट कर रहा है, आई गिव देम अ बिजनेस रिपोर्ट फॉर फ्री. मैं उससे कुछ चार्ज नहीं करता, उसको लिंक भेज देता हूँ सीधा अपने डीएम के अंदर, और वो बिजनेस रिपोर्ट उसको मिलता है, और वहां से उसको वैल्यू मिलती है फ्री के अंदर. And that's why I'm getting a good engagement on Instagram. Right. So these are little things which I have discovered after creating a content for a year or for 2 years. कि भाई अगर जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे in terms of maybe it's a business report, maybe it's in terms of knowledge, maybe in terms of explaining then things which are very complicated in very simple terms, like GST के अंदर I have created a series also on GST. तो उसके अंदर मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में मैं जीएसटी एक बिजनेसमैन को समझा दूं, लेमैन समझ में आए उस हिसाब से. एब्सोल्युटली, लेमैन को समझ में आना ही वो सबसे बड़ी चीज है. अगर आज मेरे क्लाइंट्स भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरे पास भी कुछ ऐसी क्वेरीज आती है कि सर, मैं फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली क्लाइंट को फोन किया था कि सर आपका जीएसटी का पेमेंट आ रहा है तो आप कर दीजिए. तो वो तो बोलते हैं कि सर मैंने रेंट का एक्सपेंस किया था तो आप उसको जीएसटी के सामने एडजस्ट कर दो. तो अब आई वाज लुकिंग एट लाइक हिम कि यार इनको इतना भी बेसिक सा नॉलेज नहीं है. रेंट इज डिफरेंट थिंग, जीएसटी इज डिफरेंट थिंग. वो इनकम टैक्स के अंदर आप एक्सपेंस का बात कर रहे हो, आप जीएसटी के अंदर बात कर रहे हो. तो
there is lot of financial misinformation in the market या फिर awareness नहीं है लोगों को. बिजनेस तो कर रहे हैं, उनको ये पता है माल खरीदना है, माल बेचना है, बट वो जो अवेयरनेस ऑफ टैक्सेशन है वो अभी तक नहीं है. सो माई ओनली पर्पस फॉर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज कि यार एटलीस्ट आप लोगों को इतनी अवेयरनेस आ जाए कि आपको जब सीए से बात करनी पड़े तो यू विल बी कंफर्टेबल कि यार मुझे बोलना क्या है. So that was also one of my factor for starting this content creation journey. Yes. Financial literacy, as we all know, अभी improve करना बहुत है, काम बहुत है अभी ये फील्ड में. That's right. That's right. Yeah. Sir, we have prepared a round, rapid fire round for you, and I would like to conduct the same with you. Sure. Yeah. Sure. So starting it, active investing or passive investing? Active investing. Choose. Yeah. Leasing or buying real estate? Buying. CA in practice or CA in job? That depends, but I would choose CA in practice. Top emerging industry in India right now? Energy sector. Traditional practice or specialized practice? Specialized anytime. If you were not a CA, then what you would have been? I would be into a creative field, maybe into softwares or maybe acting. One sector which is currently underperforming in India? I think EV. Okay. Startup culture or corporate structure? Which one would you choose? I would choose corporate structure anytime. That's a professionalism there. And lastly, first stock that you had bought? Okay. One is Astrodium. Second is Suzlon, which is increasing like crazy. Yeah. Third is, there is one stock, IQ Lighting. So that's a Bangalore-based lighting company. Okay. And another one is Shelby Hospitals. Okay. So that was all about the rapid fire round. Thank you. Thank you so much, sir, for being a wonderful guest on our podcast. We all are grateful for the valuable perspectives you have shared with us today. It was an honor to have you, sir, with us. And the Vadodara... I also had a lot of fun, Purva. Thank you so much for an amazing host. The Vadodara branch of WICASA will always welcome you. I think EV. Okay. Startup culture or corporate structure? Which one would you choose? I would choose corporate structure anytime. That's a professionalism there. And lastly, first stock that you had bought? Okay. One is Astrodium. Second is Suzlon, which is increasing like crazy. Yeah. Third is, there is one stock, IQ Lighting. So that's a Bangalore-based lighting company. Okay. And another one is Shelby Hospitals. Okay. So that was all about the rapid fire round. Thank you. Thank you so much, sir, for being a wonderful guest on our podcast. We all are grateful for the valuable perspectives you have shared with us today. It was an honor to have you, sir, with us. And the Vadodara... I also had a lot of fun, Purva. Thank you so much for an amazing host. The Vadodara branch of WICASA will always welcome you, and we honor that you have accepted our invitation. Thank you. Thank you so much.